of histogram is that we cannot compare the different aspects in a histogram. Means if you have made a histogram for marks of different subjects, so you cannot compare them just by having a quick glimpse. So that's one of the disadvantages, that we cannot make comparison. And second disadvantage is that the data loses its individuality. So first one is comparison. We cannot compare. Comparison. And second one is individuality. The data loses its individuality. ये जो मैं आपको यूजेस बता रही हूँ, ये पेपर में आपका 1 to 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तकरीबन हर साल. ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए है इसमें, इसलिए मैं इसको आप लोगों के साथ बार बार डिस्कस कर रही होती हूँ. All the uses and merits and demerits. Okay, ji. Now these are all the merits and demerits of histogram. Now we'll start our topic for today. It's box and whisker plots. Okay, in a box and whisker plot, नाम देखिए आप जरा इसका क्या है, box and whisker. ठीक है, you know what's a whisker? मूछें. Okay, so we are going to see how we can make a box and whisker diagram. Okay, for box and whisker diagram, you know, this is one of the most easiest and simplest things in statistics. If you have 5 things, you can easily plot a box and whisker plot. Okay, what are those 5 things? We need the least value. If some data set is given, we need the least value, the smallest value. Okay, we need the lower quartile. We need the median of that distribution. Okay, and what else do we need? We need the upper quartile of that distribution. 4 things हो गई. अब least value ली है, तो of course the 5th thing would be the maximum value. The maximum value. These are the only things which we require, the maximum value. Okay. We have a simple horizontal scale. हम क्या करेंगे इसमें? We'll just draw a horizontal line. ठीक है, और इसके ऊपर आपने ये नहीं देखना कि our axis should start from 0, our axis should start from 1, 2, 3, 4. No, not at all. आपने simply देखना है आपकी least value क्या है, आपकी maximum value क्या है, आपके lower quartile क्या है, आपका upper quartile क्या है, आपका median क्या है. ठीक है, अब least value और maximum value के दरमियान में आपने जो units लेने हैं, that scale, that should be accurate. Let's suppose आपके पास जो least value है, it's 2, and let's suppose the maximum value for some data set is 20. ठीक है, अब इसके दरमियान में जो आपने स्केल लेना है वो अब आप लोगों को एक्यूरेट लेना चाहिए है. मींस इट कैन बी, यू कैन टेक 1 यूनिट, यू कैन टेक 2 यूनिट्स, व्हाटएवर यू फील इज फिजिबल फॉर यू और पॉसिबल फॉर यू, यू कैन टेक इट. ठीक है, बस ये लीस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस तरह से जरूर आपने इनके दरमियान में आपने स्केल लेना है. ओके, सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्क करेंगे अपना लीस्ट वैल्यू यूजिंग अ वर्टिकल लाइन. लीस्ट वैल्यू जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे हमने we discussed that we are taking the maximum value as 20, so I am marking the maximum value here. ठीक है, again using a horizontal line. ठीक है, now I want to mark the Q1, median and Q3. ठीक है, let's suppose, I'm just supposing this. Okay, the Q1 is over here and the Q2 is here. Q2 means the median and this is the Q3. हमने सारी वैल्यूज को हमने वर्टिकल लाइंस के साथ हमने मार्क कर दिया है. अब ये जो आपके पास क्वार्टाइल्स हैं, कितने क्वार्टाइल्स हमारे पास होते हैं? We have 3 quartiles, right? The median, Q1 and Q3. ठीक है, इनके ऊपर आपने बॉक्स ड्रॉ कर देना है like this.
This is our box for the box and whisker plot. ठीक है, ये हमारा बॉक्स हो गया रेडी. नाउ वी नीड द विस्कर्स. अब विस्कर्स के लिए आप क्या करेंगे, ये जो आपका लोअर क्वार्टाइल है इसको आप ज्वाइन कर देंगे इस तरह से लीस्ट वैल्यू के साथ, और ये जो अपर क्वार्टाइल है यू विल ज्वाइन इट विद द मैक्सिमम वैल्यू. Our box and whisker plot is ready. We just need to mark some more values. We have to mark the value of the median. Median की जो भी value है. Let's suppose in this case the median is 8. I'm just supposing this, okay? And let's suppose the Q1 is 5. These are all suppositions. And let's suppose this is 12. Okay, I know these values aren't making any sense. I just randomly wrote some values, whatever came to my mind. Okay, so we have to mark all these vertical lines and we have to write those respective values as well over here. Okay, and then we have to draw this box on between the 3 quartiles, Q1, Q2 and Q3. ठीक है, our box and whisker plot is ready. ओके, अब ये जो बॉक्स एंड whisker प्लॉट है इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ. हेलो, जी मैम. सर ये स्क्रीन शेयरिंग फिर से बंद हो गई है. मैम ट्राई करेंगे, हो जाती है. ओके, okay. Now I'm going to take an example for box and whisker. Okay, पहले हम क्वेश्चन एक दफा पढ़ लेते हैं, then I will zoom out this. A class of pupils played a computer game which tested how quickly they reacted to a visual instruction to press a particular key. The computer measured their reaction times in tenths of a second and stored record of the sex and reaction time of each pupil. Finally displayed the following summary statistics for the whole class. Okay. For girls, the median is given, lower quartile is given, upper quartile is given, the minimum value, the maximum value. For the boys as well, the whole of the data is given. He's telling us draw 2 box plots suitable for comparing the reaction times of boys and girls. Okay. So I want to make this a bit smaller. Now we'll make a box and whisker plot for girls and for boys, both of them. Luckily, in this case, हमारे पास the median, lower quartile, upper quartile, maximum value, minimum value, he has given us. ठीक है? लेकिन in some cases, he won't give us these values, and even on that time, you have to draw. You have to make, you have to find the median, you have to find the lower quartile, you have to find the upper quartile, और उसके बाद जब answers आपके पास आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप बताएंगे कि how you will plot it. ठीक है? Okay, let's see. In this case, we are given all these things.
First of all, we need a horizontal scale. A horizontal scale. Okay. तो हमारे पास values किस तरह से हैं? We have the least value as 4 because we have to make use one scale. Okay. तो इसलिए अब मैं overall देखूंगी कि which is the least value we have. We have the least value as 4 and which is the maximum value which we have. The maximum value which we have is 19. Okay. So we need to plan somehow that the least value is 4 and the maximum value is 19. Okay, let's see it, how we can make it. I think so it would be better if I plot all the points here, starting from 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, this is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Simple, our scale is done. If you want, you can make one more value over here and you can make one more value over here if you want. Okay? But requirement is only we should have the least value and we should have the maximum value. We can, if you want, you can write 13 over here and one more value, one larger value over here, 20, if you want. Okay. Okay. Now let's start our work. First, we will complete this for boys. Okay. Which is the minimum value for boys? The minimum value for boys is 4. तो 4 वाले जगह पे हम एक whisker draw कर देंगे ये. ठीक है. And then we have the maximum value as 16. If this is 19, 18, 17, this would be 16. I have to mark this 16 here. और 16 के ऊपर एक vertical line. Okay. What else do we have? We have the upper quartile as 13, 15, 14, and this would be 13. A whisker at 13. A vertical line at 13. Then we need a vertical line at 7. It would be here. Vertical line would be here. This is 7. ठीक है. अब लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे ये बॉक्स. और लोअर क्वार्टाइल को और अपर क्वार्टाइल को we made a mistake. Yes, I left one of the values. Four, 7, 13, and 16. Okay, 16 was the maximum value. You can change it. And which one is missing? The median. Median is at 10. Here. तो median पे, lower quartile पे और upper quartile पे हम ये box draw कर देंगे. Like this. And the whiskers will be here. Upper quartile से maximum value पे और lower quartile से least value पे. Our box and whisker diagram is complete for boys. This one is for boys. Now let's make it for girls. Okay. Which is the minimum value for girls? It's 6. Minimum is 6. तो 6 वाला point हम इस तरीके से mark कर देंगे. The maximum point is 19. Here is the maximum point. Maximum point. Okay. And we have the upper quartile is 15. This is 15. Here a vertical line at 15. The lower quartile is 8. This is 10, 7, and this would be 8. 8. And then the median. Median over here as well as 10. Okay.
and then we will draw the box on the lower and upper quartiles and the median in the middle. And draw the whiskers lower quartile से least value तक और upper quartile से maximum value तक. And this is for girls. Girls. Okay, ji. Now over here, before going to the second part, he's telling us write a brief comparison of the performance of boys and girls in this game. Okay, before doing this, we're going to discuss some things which we can just look at a box and whisker diagram and we can tell easily. Okay, we can easily tell the shape of the distribution. ठीक है, ये जरा देखें जो boys वाली distribution है, the boys distribution, this is boys distribution. Okay, the boys distribution हम देख रहे हैं इसको कि ये किस तरह से है. ये approximately हमारे पास जो lower quartile है और जो upper quartile है. This is the lower quartile, this is the upper quartile, and the median is approximately in the middle. तो ये जो boys वाली distribution है, we can say that this distribution is symmetrical, or we can say approximately symmetrical. ये distribution हमारी symmetrical है, ये evenly distributed. ठीक है? Okay. Next thing, for girls, when we look at this distribution, हमने इस box को main देख के हमने discuss करना होता है. ठीक है? ये जो box है हमारा box and whisker plot का. Okay. In this box, look. This is our lower quartile, this is our median, and this is our upper quartile. Where do we have most of our data? Is it before the median or is it after the median? There are more values after the median. Yes, look, it's having a big space here. We have more values after median. So this distribution, the girls' distribution, is positively skewed. It's not a symmetrical distribution, it's positively skewed. Positively skewed. तो देखें ये जो हमारा box and whisker plot है, it's helping us to compare two data sets quite easily. This is what I discussed in histogram, that in histogram it's quite difficult to compare two different values, to different objects. But in box and whisker, it becomes quite easy and quite clear to compare two objects or two different sets. Okay, तो गर्ल्स वाला जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है और बॉयज जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास. ओके, अब हम आ जाते हैं जरा अपने ये जो उसने जो क्वेश्चन था, ही इज टेलिंग अस गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस गेम. ओके जी, जब हम इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन कंपेयर इट. I just need the stem and leaf diagram now. Okay, how we can compare it now? We see that both of the distributions have the same median. Okay, so you can write here that they both have same median. Whatever information you get by looking at them, you will start writing it. They both have same median. Okay, now look at the boys. The boys' reaction time, the least time which they took to react was 4. Okay, of course it's in 10th second में है ना, लेकिन मैं इसको 4 में अगर मैं सिर्फ लिखूं जैसे values हैं, I'm just for discussion I'm just using the word 4. ठीक है, अच्छा जी, तो boys का reaction time अगर 4 units है, तो look at the reaction time of girls, it's starting from 6. So this means boys had a quick reaction time. A quick reaction time. Quick reaction time. Hello? जी मैम. सर ये नजर आ रहा है जो मैं लिख रही हूँ? जी जी, विजिबल.
Okay. Okay, the quick reaction time. Next, look at these. What about the girls? The maximum time which they took, it was 19 seconds. What about the boys? They took 16 units. Okay. So when we compared them, we see that the boys reacted quite quicker than girls. Okay, next thing. Let's see कि girls में variation, girls के data में variation कितनी है और boys के data में variation कितनी है. ठीक है. Look at this portion. ये जो portion है हमारे पास, मैं जरा इसको highlight करती हूँ. This portion, ये गर्ल्स का रिएक्शन टाइम है और ये है हमारे पास वेरिएशन बॉयज में. लुक एट द वेरिएशन इन गर्ल्स. वेरिएशन या फिर आप यू कैन से वेराइटी या फिर हाउ मच रेंज दे आर हैविंग, वो हमेशा फाइंड करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज से, इफ क्वार्टाइल्स आर गिवन, एंड रेंज इफ क्वार्टाइल्स आर नॉट गिवन. ठीक है. तो यहाँ पे गर्ल्स में वेरिएशन, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन. Look, this line, it's quite big. ठीक है. In boys, the variation is quite less. ठीक है. Even we can write this point here, that the girls took had more range for girls and we have a less range for boys. Less range for boys. These are all the things which we can discuss using this box and whisker plot. Okay, ये पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि he gives us two different data sets. He tells us to plot the box and whisker plots and then he asks us to compare them. तो इस तरीके से हम compare किया करेंगे. We will look at them. फिर हम discuss करेंगे कि वेरिएशन कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे वेरिएशन कम है, और एट द एंड आपने ये बताना है. ओवर हियर दे वर डिस्कसिंग द रिएक्शन टाइम. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक द रिएक्शन टाइम, who had the more reaction time, who had the less reaction time? Of course the girls, they took overall, they had more reaction time, and boys overall, the boys took a less reaction time. Okay, so you have to write this line as well, that the boys were quicker, which we have discussed over here as well. ठीक है. सो ये जो हमारा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, इसके ये आज मैंने इस एग्जांपल के साथ ही आई हैव डिस्कस्ड इट्स एडवांटेजेस एंड आई डिड नॉट डिस्कस द डिसएडवांटेज टिल नाउ. लेकिन मुझे लगता है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि डिसएडवांटेज क्या हुआ होगा. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें जब भी डाटा हमारे पास इंडिविजुअल डाटा हमें नजर नहीं आ रहा है तो हम फौरन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वी डिस्कस दैट the individuality of the data is finished. ठीक है. तो in this case as well, the individuality of the data is finished. जितनी individual values हैं वो हमें नजर नहीं आ रही. We just see the lower quartile, we see the upper quartile, we see the median, we see the least value and the maximum value. That's it. We cannot see the rest of the values. ठीक है. Okay. Okay boys, मैंने सर को एक वर्कशीट दी है, ये बॉक्स एंड विस्कर से रिलेटेड. ठीक है. वो आप सर से लेंगे और उसमें इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ठीक है. ऑफ कोर्स सेम क्वेश्चंस नहीं हैं, दे आर डिफरेंट क्वेश्चंस. यू हैव टू लुक एट दोस क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू सॉल्व इट. अगर सॉल्व नहीं होता है तो कल जब आप आएंगे क्लास में तो सबसे पहले ये जो वर्कशीट है ये आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस करनी है. और लास्ट टाइम कल सर ने बताया था कि आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वाली जो वर्कशीट है वो भी आप लोगों को नहीं मिली थी. ठीक है. तो वो भी आप लोगों को आज मिल जाएगी. आप वो वाले क्वेश्चंस भी कीजिएगा. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स डू आस्क मी टुमारो. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे पास पास पेपर्स अब आपके पास होने चाहिए. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा,
representation of data. This topic is finished. You can solve any question from past papers from these topics. And if you face any problems, you have to ask me those problems. ठीक है? और मैंने जो आपके पास जो पास्ट पेपर्स होने चाहिए वो भी मैंने बता दिया है आप लोगों को, ठीक है, सर जवाद के। तो लेट मी नो इफ यू हैव दैट। अगर नहीं है आपके पास तो सुबह मैं आप लोगों को वो जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।